Moving ahead with this topic, now we will be doing the chemical properties of alcohol. So the chemical properties of alcohol, we will start with reaction with metals. Now reaction with metals, we see an alcohol reacts with sodium to form RONA. Basically the hydrogen is removed. Similarly, if I take a tertiary alcohol, it reacts with aluminum to form trialkoxide aluminum. Why 3 here? Because aluminum has a valency of 3 and hydrogen is released. Similarly, again here if you see phenol, when reacts with sodium, forms sodium phenoxide. This is what? Sodium phenoxide. So what are we seeing? Every time alcohol is reacting with a metal, hydrogen is released. That means the one which releases hydrogen is the one which is acidic in nature. So reaction of alcohol with metal proves that it is a Bronsted acid. You must have studied in class 11 their Bronsted theory, right? The one which loses hydrogen is an acid, the one which takes hydrogen is a base. Now here you see this, suppose there is a base here, it takes a hydrogen from the alcohol and it forms alkoxide. Okay, so here we are able to prove with this 3 reaction that alcohols are acid. Which acid? Bronsted acid. Why? Because it can release hydrogen. Now we will compare the acidity. Now you see this, how do we compare the acidity? This is a primary alcohol, this is a secondary alcohol and this is a tertiary alcohol. Now if you all remember, which I had told before also, now suppose I replace this with CH3 group, okay? Just for your better understanding, I replace this with the CH3 group and simultaneously all this is the CH3 group. Now we all know that methyl group has got a positive inductive effect. Electron releasing group है ये सब. जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ठीक है. सो जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस. यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. सो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया. ठीक है. सो इट बिकम्स पॉजिटिव, देन this is also positive. So the release of hydrogen, sorry, this becomes negative here. This becomes negative because they all are releasing electrons. So this is becoming negative and this is positive. Now the release of hydrogen is difficult here. So what we are trying to prove, who is an acid? A stronger acid is the one which can easily remove hydrogen. So now when I comparing these 3, इसमें क्या है? 3 releasing group है. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो रहा है? The electron density is increasing in O minus. So the removal of this is difficult. हमें क्या चाहिए कि जब दोनों पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन रिमूव करना इजी रहेगा. सो इफ आई कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी. क्यों? क्योंकि टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप है और तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सो ऑक्सीजन इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. तो हाइड्रोजन O is more negative and H is more positive. So the breaking of bond is difficult. So आराम से हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा. सो दैट्स वाई द एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टर्शरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी. एक और चीज देखिए, विथ वाटर इफ यू रिएक्ट अल्कोहल वी प्रूव दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. कैसे? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है अल्कोऑक्साइड, इफ आई टेक दिस अल्कोऑक्साइड देन इट टेक्स हाइड्रोजन. So when we compare alcohol and water, we saw that it is acting as a Bronsted base क्योंकि ये हाइड्रोजन वाटर से ले रहा है. ठीक है. So alcohol's acidity is comparable depending upon which they are reacting. ठीक है. अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो it is acting as an acid. Okay. But in comparison to water, it becomes a base. Right? Now we will see compare between phenol
and any methyl alcohol. Okay, we will take any methyl alcohol. Let me take a CH3OH. Okay, now I will explain you that why. I will be explain you that why phenol is a better acid than a methyl alcohol. Okay, so if you see phenol, let us observe how is phenol is. Okay, now this phenol, this carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized carbon is more electronegative, so it is pulling electron. So ये जो lone pair है ऑक्सीजन के ऊपर, it is being pulled. Plus there is something called resonance. We have learned this in that halo chapter also, haloarenes. Due to resonance, what is happening is, if I do the resonance part of it, if you see this, what I observe is the oxygen is getting a positive charge. ठीक है, ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है. सो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव. सो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज बिकमिंग बिकॉज सेम चार्जेस दे रिपल. आपको एक चीज याद रखना है, एसिड कौन है? एसिड इज द वन विच कैन रिलीज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आराम से कब निकलेगा? जब ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी यही बात हुई कि इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था तो ऑक्सीजन और नेगेटिव बन रहा था, तो इसीलिए ये एसिडिक कम है. पर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रीजन इज बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 hybridized and an sp2 hybridized carbon is more negative, so it pulls the electron density towards itself, makes the oxygen positive. एक बात वो हो गई. Second is due to resonance, again it is getting a positive charge. So this is the second reason why the release, the electron density reduces in oxygen, so the release of hydrogen is easy, so it is a good acid. Third reason मैं आपको बताती हूँ, मान लो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ठीक है, मान लो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. So what we do is, मान लो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, so we get a phenoxide. मान लो ये एसिड बन गया और ये इसने अपना H+ रिमूव कर दिया. नाउ दिस फिनॉक्साइड इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. दिस फिनॉक्साइड इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. कैसे? ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, देन वी विल गेट अगेन, this becomes double bond O plus, this minus, this goes here, this goes here. Again next step it goes here. This resonance structures I have shown you before also in haloarenes. Okay, so there are three reasons why we consider that phenol is more acidic. Very, very important question, CBSE's favorite questions. They do ask why phenol is more acidic. First is the carbon which is holding OH is sp2 hybridized and it is electronegative, so it pulls the electrons from the oxygen, so release of hydrogen is easy. Second is due to resonance, the oxygen gets a positive charge, so release of hydrogen is easy. Third is after removal of hydrogen, the oxygen, the phenoxide which is formed is also resonance stabilized. अब हम इसकी तरफ देखेंगे कि भाई अगर इसकी कंपैरिजन करें, लेट मी टेक अ बिगर लॉन्गर चेन. सपोज आई टेक दिस. नाउ हियर यू सी दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज making it more negative, so release of hydrogen is difficult. दूसरा, if I see this, the alco oxide which is formed, correct, the alco oxide which is formed compared to the phenoxide, this phenoxide is resonance stabilized, but alco oxide is not resonance stabilized. It has only got one negative charge on oxygen, whereas iska jo negative charge is delocalized due to resonance. So that's why phenol is more electronegative. Now we will take another concept, the same thing. Now suppose I take phenol and add a electron withdrawing group. ठीक है, मैंने क्या किया, I have added a electron withdrawing group. This is very important. In 11th you must have studied who are electron giving group and who are electron withdrawing group. Please याद रखो NO2 aldehyde
acid, these are all electron withdrawing group. So ये इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करता है, ठीक है. So वैसे ही ये भी विद्रॉ कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन विद्रॉ कर रहे हैं. तो क्या बन रहा है, ये और प्लस बन जा रहा है, सब लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ऑक्सीजन से. सो इट इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव, सो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज मोर इजी. यानी कि व्हेन आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, when I am adding a electron withdrawing group, then the acidity increases. Please note it down. When we add a electron withdrawing group, the acidity increases. यानी कि अगर एक NO2 है, अगर मैं बोलूँ कि तीनों जगह पे NO2 है, ओके, ये फिनॉल है और ऑर्थो पैरा, तीनों में दिस इज पिक्रिक एसिड. OH with 3 place NO2, 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 it is used for explosive also. Okay, this is called picric acid. We call it picric acid, right? So this picric acid is extremely acidic. क्यों? There are 3 electron withdrawing group. But एक और चीज़ है, you have to note down. If I have ortho, suppose I give you ortho nitro phenol. And I gave you metanitrophenol, then orthonitrophenol will be more resonance stabilized. Why? I will tell you कि अगर मान लो यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप है, ठीक है, और आपने अल्को ऑक्साइड बनाया, मान लो हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, ठीक है, there is no NO2 ग्रुप here. ओके, there is no NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप सिर्फ कहाँ पे है, इसमें है. सो एक रेजोनेंस स्टेप क्या होता है, एक यहाँ आता है और एक यहाँ आता है, ठीक है, अगर फिनॉक्साइड आयन बन गया. सो ये फिर क्या होता है, इफ देर इज अ नेगेटिव चार्ज हियर, देन वी गेट अनदर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्टेट हियर विच इज O-, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर. देन दिस इफ यू स्प्लिट इट, ओके, आई विल जस्ट रब ऑल दिस. So there was a minus sign here. This minus sign can be delocalized. This minus sign can be further delocalized. So यानी कि अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलूँ और मेटानाइट्रोफिनॉल बोलूँ, then we will say that orthonitrophenol is more acidic. Okay, so we understood 2 things. Phenol is more acidic than alcohol, and second thing is if I add a electron withdrawing group, the acidity increases. Similarly, if I add a electron releasing group, ठीक है, अगर मैंने CH3 डाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, द एसिडिटी विल डिक्रीज. प्लीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीजेस. और जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डालोगे उतना ज़्यादा एसिडिटी कम होगा. यानी ट्राई मिथाइल फिनॉल डालोगे तो ओबियसली उसकी दिस इज क्रिसॉल ऑल्सो इट इज कॉल्ड, इसकी एसिडिटी कम होगी. ठीक है, OCH3 डाल लो चाहे, ठीक है. So even this is also electron releasing. There are 3 major electron withdrawing group. One is nitro, one is aldehyde and acid. I hope you are clear with this. This is very important portion. The why phenol is acidic and how electron withdrawing group increases the acidity. We will continue with the chemical properties. Thank you.